Right, I have switched on the recording now. So these were the basic synopsis that we required over here. So once again, let me introduce. We are going to see Newton's laws of motion, NLM in short. We are going to see the basic types of force. कौन से forces? Only we are going to focus on weight, reaction, tension, and friction. I am not going to write applied force because applied force is not a type. And we are going to see free body diagram in detail and friction. फ्रिक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, सारे फोर्सेस पढ़ेंगे बट फ्रिक्शन को थोड़े और डिटेल में पढ़ेंगे. एंड देन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सर्कुलर मोशन, so we are going to use only the FBD and Newton's laws of motion to the problems. So we will see the problem and then analyze whether this circular motion problems can be solved using FBD or NLM. भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो वेट ही हो गया, वेट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये स्टेटमेंट याद रखना है, सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ. व्हाई दिस इज रियल लॉ? बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम सेकेंड लॉ. एंड मोस्ट स्पेसिफिकली फ्री बॉडी डायग्राम में वी आर गोइंग टू शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. मतलब ऑब्जेक्ट पे क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहे हैं हम उसे ही सिर्फ दिखाने वाले हैं, उसी को हम फ्री बॉडी कहेंगे. Right, like here we saw the example. So yeah, now before heading ahead to discuss all basic types of force, all can write the map of what we are going to do. And जिनको भी doubts होगा in between, keep asking me guys.
यस यस, ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट होगा. जल्दी जल्दी लिखेंगे, ये बस मैपिंग जरूरी है फॉर दिस बिकॉज इट कवर्स too many complicated things. This is very easy chapter, but if we do not go in a flow, it will not be good. तो ये जल्दी से लिखेंगे. And let us start with basic forces. Let me in the poll. Let me know in the poll. 1 minute more, guys. Then we will start with forces. Okay, let us start now with the forces. So the definitions might be clear to all. Definitely, it must be clear what is a force. We can say it's a kind of push or pull, or even it's a kind of hit. So in the book, you may see the definition just as push or pull, but hit is also a kind of push, instantaneous push. So we can say push, pull, or hit applied on an object. So you can say this is an act of push or pull, which might change the state of motion. So why I have written might change state of motion? Because it's not necessary that whatever force we apply, it's gonna change the state of motion. If that force is sufficient enough to displace the object, then only object ka state change hoga. So here comes what are the types of state. So we have two types. One, state means I am talking about या तो object rest में है or it is in motion. So any two objects may have only two possible state. या तो वो rest में रह सकता है or it can be in motion. Rest means we mean stationary state. Either you call rest or stationary state. Either you call motion or dynamic state. That's why here we are going to look at dynamics of motion, right? Dynamics means object is in motion and we are going to analyze the complete forces, with what speed it is moving and all. Okay, so now comes the types of force. So first, force, I will write its type as balanced or unbalanced force. So of course, force is a vector quantity, guys. You must all be knowing.
फोर्स के पास मैग्नीट्यूड है एंड इट हैज डायरेक्शन ऑल्सो. यू अप्लाई फोर्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन ओनली. बिना डायरेक्शन के वी कैन नॉट अप्लाई द फोर्स. दैट्स वाई इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. ऐसा यूनिट सभी को पता होगा. It is Newton. We also have CGS unit, that is dyne. And you must know the relation between SI and CGS, that 1 Newton is 10 to power 5 dyne. CGS क्या हो गया? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. SI यूनिट में मीटर kilograms and seconds. This is also called MKS system, or you say SI system. So we have two types of force. One balanced force, another unbalanced force. Dyne is the unit of force. We will see that in detail. Dyne कैसे उसका नाम डाइन पड़ा, बट एटलीस्ट हम न्यूटन सेकेंड लॉ तक चले जाए, देन इट विल बी मोर क्लियर अबाउट डाइन. It's just like you have the relation between meter and centimeter. What is centimeter? Unit of length. What is meter? Unit of length. So this is 10 to power 2 centimeter. In the same manner, 1 Newton is 10 to power 5 dyne. And we have two types of force, balanced and unbalanced. Let us say this is an object kept on the ground. Let us say one person applies force to the right with 10 Newton, another object applies force to the left, same, that is 10 Newton. और let us say ये ऑब्जेक्ट है, इस पे दो पर्सन ने राइट पे फोर्स लगाया 5 और 5 या फिर 5 और 7. थर्ड पर्सन अप्लाइज फोर्स टू द लेफ्ट, दैट इज 12 न्यूटन. नाउ यू कैन सी जो नेट फोर्स होगा, बिकॉज गाइस फोर्स इज वेक्टर, द टू वेक्टर्स आर अपोजिट, सो व्हाट इज द नेट रिजल्ट? नेट फोर्स हियर विल बी 0. हियर आल्सो इफ यू सी नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा. सो दीज फोर्सेस, force 1, force 2, or here force 1, force 2, force 3, they are called balanced force. So what do we mean by balanced force? These are the forces which add to produce zero result. So balanced force में क्या याद रहना चाहिए? बस एक चीज, that the net force is 0. So all the forces are said to be balanced when the net force is 0. Unbalanced force when the net force is not 0. जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे दो ने लगाया 3 न्यूटन 10 न्यूटन, एक ने लगाया 2 न्यूटन टू द लेफ्ट. So here if you add these forces, what we will get? 3 plus 10, because they are acting in the right. Let's take right direction as positive, left direction क्या होगा? Negative. So what is this force? This is just the magnitude of force guys. इसको अगर हम डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो क्या होगा? -2. So the net force here is 11 Newton. And what do we observe? That this net force is not 0. So all must have understood balanced and unbalanced force. Well, I can also write, let us say ये force दे दिया F1 is 3 Newton. So actually this is not the force. This is just the magnitude. I must write F1 as 3 I cap. Let us say this is F2. तो F2 कैसे लिखते? -2 I cap. ये अगर F3 का मैग्नीट्यूड है, so we would have written F3 as +10 I cap. So this I cap, J cap is necessary when the forces acting on the object is in two dimension. अगर एक स्ट्रेट लाइन में ही फोर्स एक्ट कर रहा है, then we can take right direction positive, left direction negative. And then we can also say कि अगर हमारा right direction positive है, we can say F1 is 3. Now this is also a vector. F2 if we say -2, this is also vector. Minus indicates that the force is acting to the left. But what is suggested? That we have to use this I and J and K cap accordingly.
Okay, so these are the two types of force based on whether they are balanced or not. We have yet another classification of force. I can also describe force as contact force or non-contact force. Contact means those forces which arise due to contact between the surfaces. That means the word itself is clear. Contact matlab we are going to write down those forces which are due to the contact between surface. If I give the example, now this definition will be clear. Friction force. फ्रिक्शन फोर्स कब एक्ट करेगा? जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में रहेंगे. नॉन कांटेक्ट, opposite to contact force, we can say these are the forces which arise due to, which is due to, or which exist even without any contact, which exist even without contact between surfaces. Example of non contact force, weight आ गया. Weight is acting at all the times regardless of whether the object surfaces are in contact or it is not in contact. Gravitational force, that's the cause of this weight. वेट जो ऑब्जेक्ट अगर मास m है, इसका वेट जो mg है, that is because of gravitational pull. So we are talking about that weight. So guys, now write down the types of force and then we are going to see in detail. First weight and then friction force and then normal or reaction force, and finally the tension force. Tension means I am not talking about the stress which we take for example before the exam. I am talking about the force. ये एक type है force का. So okay, we will talk about them in detail. And then we will use them to classify whether they are contact force or non-contact force after we have detailed discussion on them. So yes, before that we should complete all about the forces and its types. तो सभी कोई इसको लिखेंगे with the examples and keep asking me the doubts. Yes, reaction force is also type of contact force. This will become clear when we will have detailed discussion on them. It's not like in dynamics only unbalanced force exists. We are also going to talk about balanced force situation, because when the force here net force is zero, it doesn't mean that object is not moving. Object is moving, but it is moving at constant speed. Because net force zero hai, that means mass into acceleration is zero. So acceleration zero hai, that means the velocity is constant or the velocity is zero. That means object
एक्सीलरेशन जीरो कब पॉसिबल है? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या फिर जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। तो इसमें ये केस भी तो है ना। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डील अबाउट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बोथ। ओके, जल्दी करेंगे एंड लेट मी नो इन द पॉल। लिखने का मतलब है कि वंस अगेन यू ऑल गाइस व्हाइल नोटिंग देम डाउन यू शुड अंडरस्टैंड देम एज वेल।
Quickly, all will let me know, whoever have done. Okay, so moving ahead now to these forces, let us try to understand them in detail. So first we have weight. So if the object is of mass m, and let us say this is Earth's surface, then what we notice that if we throw an object comes down. So even though the object goes up or it comes down, regardless of that, the weight acts in the downward direction, that is mg. Now this weight, this force has the direction. We have a fixed direction for that. What is a fixed direction? Towards the surface of Earth. So let us say, even if we have an inclined plane and an object, let us say this is kept on the surface of Earth, and the object is here of mass m, then can you all tell me whether the weight will be this one or it will be this one, like 1 or 2? Along which direction weight will be acting? Of course, along 1, because weight, regardless of where the object is, its direction is fixed, that is towards the surface of the Earth. This is all we require about weight. Talking about friction force. Now this force is simple. If the object is moving on a rough plane, let us say this is rough. So guys, we have the question based on smooth plane as well. Smooth smooth surface में friction नहीं होगा. So we will assume that there is no friction, although no such real cases can exist, but if it is given that the surface is smooth, we will neglect the friction. So let us say here the object is moving to the right and the friction will be acting to the left. Because what is friction? Let us try to define. This is force, you can say a contact force, which resists the motion of an object. If we apply the brake, we are able to stop. After we apply the brake, it is because of friction. We are able to walk, that is because of friction. If on the ground there would have been no friction, because let's say I want to move this direction, so my feet, through my feet I will apply the force in the backward direction. This is the applied force. And friction, it opposes applied force. You must also remember, as I have written here, it's a contact force which resists motion of an object. To be more specific, we can say friction opposes applied force direction. So according to Newton's third law, to every action there is equal and opposite reaction. So if this is an action, then there will be equal and opposite reaction. And this is the friction force. So it is due to the friction because of which we are moving. Now you can see my direction of movement is to the right
and friction is also to the right. That means this becomes somewhat irrelevant to say that it resists motion of an object, right? In some cases, it even supports motion. So how can we define friction now? Let us use proper definition. Friction, it resists or opposes relative motion. Now this is correct. We will not say it opposes motion, but it opposes or resists relative motion. Relative motion means motion of an object with respect to other. So with respect to this ground, object's motion is restricted, right? Here also with respect to the ground, object's motion is restricted. It is opposed. In friction, in space, there will be no friction acting. It's not like we are just considering friction due to surface. Friction is also due to the air molecules also gives rise to friction. You can say that as the drag force. We are going to discuss this in detail, not in this unit but in the liquids chapter. The drag force or any kind of resistive force, maybe air resistance or liquid resistance, those are all impeding the motion of the object. In short, friction opposes motion. So what is the direction of friction, guys? जिधर मोशन हो रहा होगा उसके ऑपोजिट में, बट इस केस में मोशन इधर हो रहा है, सो दिस मोशन इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. Whatever direction we apply the force, that is also an important factor. So two factors are important to determine the direction of motion. Generally this is the case which we see most of the time in the problems, but let us also take this into consideration. Friction, is it clear, guys? Okay, now talking about रिएक्शन फोर्स और द नॉर्मल फोर्स. पहले हम सिचुएशन देखते हैं, फिर समझते हैं ये रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स क्या है. लेट अस से दिस इज अ टेबल एंड यू कीप अ हेवी मास हियर. कोई एक ब्लॉक विच इज ऑफ मास m यू हैव केप्ट हियर. नाउ इसको समझने से पहले एक और चीज देखते हैं. लेट अस से दिस इज द ब्लॉक. इफ यू अप्लाई फोर्स, then the block will move in the direction of force, right? Block moves in the direction of force, right? That's very clear. जिधर हम फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट उधर ही मूव करेगा. सो ऑन दिस ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? वेट एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, दिस इज वेरी मच लॉजिकल. सो इफ वेट इज एक्टिंग, दैट मीन्स इफ अ फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो कुछ टाइम के बाद क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट नीचे आना चाहिए. ऑब्जेक्ट शुड बी मूविंग डाउनवर्ड. तो अगर ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है, दैट मीन्स there is no support provided here, but we have the support. So in terms of force, if we observe, there should be some other force which should balance this mg. So that is reaction force. This reaction force is provided by the ground. You call reaction or you call normal force, दोनों एक ही है. And you must understand here that reaction is equal to weight, right? इस केस में फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, रिएक्शन इक्वल टू वेट हो गया, तो क्या हो गए? फोर्सेस बैलेंस्ड हो गए. अब जब फोर्सेस बैलेंस्ड हो गए, देन देयर इज नो मोशन. दैट मीन्स वी हैव एक्सप्लेन्ड द कॉज फॉर नो मोशन in the direction of the force, because actually it was not moving, so there must be some other force. Now guys, this is not possible every time. Let us say here, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये वेट एक्ट कर रहा है, तो रिएक्शन फोर्स किधर एक्ट करेगा? 1 या 2? एनी वन ऑफ यू टेल मी, किधर एक्ट करेगा रिएक्शन फोर्स? 2 के इधर एक्ट करेगा. गुड. दैट मीन्स अगर 2 के इधर एक्ट किया, तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते हैं ना दैट रिएक्शन इज इक्वल टू वेट. इट्स नॉट राइट.
तो गाइज हम इसको नॉर्मल फोर्स क्यों कहते हैं? नॉर्मल का अगर मतलब पता होगा तो इसका मतलब होता है राइट एंगल, दैट मीन्स परपेंडिकुलर. सो वी हैव अगेन द फिक्स्ड डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स. वो फिक्स्ड डायरेक्शन क्या है? देखो सरफेस के परपेंडिकुलर. यहां पर भी देखो ये सरफेस के परपेंडिकुलर. सो लेट अस राइट द फिक्स्ड डायरेक्शन एज वेल. इट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस. जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर में भी अवे फ्रॉम द सरफेस. परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम सरफेस. नाउ कमिंग टू द लास्ट टाइप ऑफ फोर्स. सभी को एक साथ नोट करेंगे, अभी नहीं करना है, ये समझना है. सो गाइस इफ यू हैव स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ले लें या फिर रोप ले लें, तो इसको भी हम समझते हैं इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग. लेट अस से ये सीलिंग है, दैट मीन्स टॉप ऑफ द रूम, एंड यहां से मैंने थ्रू अ रोप आई हैव अटैच्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, राइट. लेट अस सी द फोर्सेस. क्या फोर्स एक्ट कर रहा है इस पे? mg फोर्स एक्ट कर रहा है. बट क्या ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? नो, इट इज at rest at this point. It is stable at this point. That means there must be some other force which is balancing this mg. So that is the tension force. Now, what is the cause of this tension force? So if we observe the rope, उसपे सारे atoms होते हैं. So when you have attached some block of heavy mass, so the interatomic forces, that is the attraction forces, this attraction forces, there will be strain in that. That means the object, these two molecules will try to move apart. So it is the attraction force which increases at that time. So that is tension. So now the thing is, if tension acts between every pair of molecules, right? If tension acts between every pair of molecules, then what is the direction of tension we have to take? So guys, clearly I have told that with respect to the object, tension, I will take it in the upward direction. That means always take it along the string and away from the mass. So let us remember this fixed direction as well. Along the string and away from the mass. Okay, so let us say we again have another object. Let us say ये रहा object और इसको मैंने दो string से connect किया है. So in what direction tensions will be acting? Away from the mass and along the string, like this. There will be two tension. In any one string, tension will be same at all points. In different strings, tensions will be different. Okay, so now you all guys can write down the stuffs from these forces. Weight का क्या हो गया? mg.
So till now we have just seen the way to find out the magnitude of force and to get the direction. And of course, if we increase the number of strings, the tension will get divided. We will see this with respect to the questions. So weight कैसे निकालते हैं? mg. Normal कैसे निकालते हैं? You can project these forces. We will talk later on. But in short, just compare with the weight. Tension mg हो सकता है, but इस केस में tension mg नहीं होगा ना. So we will deal with those situations. So quickly all will write and let me know in the poll whoever has completed this.
Okay, all would have done now. We cannot say that the magnitude of force applied by Earth is equal to the magnitude of normal force. Why we cannot say that? क्योंकि इस केस में ये जैसे अर्थ का सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड इज mg, right? This is the force applied by Earth. And in this case, तो ये नॉर्मल हो गया, राइट? n is equal to w. But इस केस में magnitude of force applied by Earth is w, and this is equal to mg, right? This is the force applied by Earth. But this is the direction of normal. So guys, force is vector. अब vector में you can say if this and this are equal, they are in opposite direction, then they may be equal. But इस केस में opposite तो नहीं है, forces are not equal. Although ये value भी एक हो जाए, but फिर भी this normal and the force applied by Earth, which is weight, it's not equal. So in that case, what will be the normal? So we have to project the weight. Weight को दो projection करेंगे हम. एक इधर आ जाएगा. Let us say this angle is theta, तो एक आ जाएगा w cos theta. एक इधर आ जाएगा w sin theta. Now guys, now you can say n is equal to w cos theta. देखो, object vertical direction में move नहीं कर रहा है. That means along this direction, object's forces is balanced. But along this direction, there is an unbalanced force w sin theta. और इसी force के वजह से तो object slide करता है along the surface. Okay, this is just basic thing. अभी हम इसको ध्यान नहीं देंगे. Yes, normal force depends on the situation, how the object is moving and where the object is moving. That means basically what kind of surface is there. Okay, now we will talk about free body diagram. अभी हम ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे, बस हम पहले देखेंगे कि free body diagram कैसे draw करते हैं. So what is free body diagram? This is the representation, as the name suggests, free body diagram. So what is this diagram all about? This is the representation of all forces acting on the object. Right? So let us see the example. Example से clear होगा. For example, this is the object and you have been given that a force of F Newton is applied on this object and the surface is rough. So draw the free body diagram. So of course you need to draw the FBD of object. So if this is the object, then there is weight, there is the applied force, क्योंकि ये force भी तो object पे apply हो रहा है, and there is normal reaction because the object is kept over the surface, and if it is applied force to the right, that means it will be resisted by this rough surface. So this will be the friction force. Now guys, where these forces will be acting? First thing that we remember in this chapter, जब भी हम FBD draw करेंगे, that is correct, we will represent all the forces acting on the object. Along with this, we will also remember to consider object as the point mass. तो ये हमने कंसीडर कर लिया. यहां पर ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास की तरह कंसीडर करेंगे, तो नॉर्मल यहां पर, mg यहां पर, फोर्स एंड फ्रिक्शन. So in the question I may draw this kind of diagram, but you all must remember FBD जो हम draw करते हैं, we show all the forces, acting on the object, considering it as a point mass.
So to draw FBD, what we will do? Consider, or you can say show all forces acting on the object. Show all the force acting on the object considering the object as point mass. Okay. So all of you write down related to FBD. We will see many more examples. This is the basic of this chapter. ये समझ में नहीं आया, that means पूरे chapter clear नहीं होंगे. So it's very important to understand this free body diagram carefully. अगर हम ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे तो यहाँ फोर्स लगाए और हम यहाँ फोर्स लगाए, सो दिस ऑब्जेक्ट विल रोटेट. वी आर गोइंग टू सी इन द लास्ट चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे रिजिड बॉडी डायनामिक्स. This is not rigid body which we are talking about. We are talking about dynamics of point sized mass. Considering all the questions and all the scenarios are given for a particle whose size is just a point sized. So ये rotation हम बाद में पढ़ेंगे. Let us see another example. With more and more examples only, you will understand free body diagram. Now let us say
the object is sliding down a rough incline. So you have to show the free body diagram of this object. So first consider it as a point mass. तो जो अब force लगेंगे वो एक point पे ही लगेगा. There is weight, there is normal force, and there is friction. These are the only forces acting on this object. Is there any other force, guys? On the object, is there any other force acting? रफनेस के वजह से फ्रिक्शन क्रिएट हो गया, कांटेक्ट के वजह से नॉर्मल फोर्स हो गया परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द सरफेस, ग्रेविटी के वजह से वेट क्रिएट हो गया. लेट अस सी अनदर एग्जांपल. ये सारे एग्जांपल सभी को लिखने हैं. Let us say this is the ceiling and there is some kind of pulley arrangement here. तो ये rotate हो सकता है. So you have a string passing this pulley. Let us say this is M1 and let us say this is M2. So you have to draw the free body diagram. So how many objects are there? Two objects are there. So you need to draw the free body diagram of both the objects. तो M2 पे क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है? टेंशन. What is the direction of tension? Along the string away from the mass. And there is also weight, that is M2G. That's all. On M1, what are the forces acting? Tension. टेंशन अगेन अवे फ्रॉम द मास एंड अलोंग द स्ट्रिंग. इस दोनों में टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट होगा. सो टी एंड ऑफ कोर्स इट्स वेट m1g. नाउ लेट अस सपोज this m2 is greater than m1. so what will happen? it will accelerate in this direction. so वो acceleration का डायरेक्शन है, मूवमेंट का डायरेक्शन है, मोशन का डायरेक्शन है वो. so due to the acceleration, ऐसा नहीं कह सकते हैं ड्यू टू एक्सीलरेशन force is applied. It is because of the force acceleration is produced. अगर फोर्स ही नहीं रहेगा तो एक्सीलरेशन कैसे क्रिएट होगा? सो दे आर एक्सीलरेटिंग. लेट अस से एक्सीलरेशन ए है तो दोनों का एक्सीलरेशन ए ही होगा बिकॉज दे आर कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स. So this is the free body diagram. By the way, in the free body diagram, you do not show acceleration. You just show all the forces acting on the object. This is just for solving certain other questions asked in the problem, जिसमें कि हम एक्सीलरेशन डिटरमाइन करते हैं या कंसीडर करते हैं. So are these two cases understood? Okay. Let us see another case now. So let us say this is a wall and this is the floor. या फिर फ्लोर कंसीडर नहीं करते हैं, just let us consider the wall. And there is an object. You are applying some force to keep the object stationary over this rough wall. Right? फोर्स लगाएंगे ना तभी हम इस ब्लॉक को यहाँ पर होल्ड कर पाएंगे. So let us say this block is held. Of course ब्लॉक का कोई मास होगा. So now draw the FBD. Can anyone annotate here the forces? एक तो फोर्स हो गया एक्टिंग टू द राइट, दिस इज द अप्लाइड फोर्स. ऐसे ड्रॉ कर दो या फिर ऐसे ड्रॉ कर दो, बात बराबर है. बिकॉज वी नो आई कैन रिलोकेट द वेक्टर, कहीं पर भी मैं रिलोकेट कर सकता हूं. देयर इज ऑल्सो वेट. फ्रिक्शन कहाँ होगा? देखो ऑब्जेक्ट स्लिप करना चाहेगा नीचे तो फ्रिक्शन विल बी अपोजिंग दिस, इट विल बी बैलेंसिंग, तो फ्रिक्शन अपोजिट में होगा. इज देयर एनी अदर फोर्स गाइस? देयर विल बी नॉर्मल. नॉर्मल अपवर्ड नहीं होगा, नॉर्मल इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सरफेस
and perpendicular to the surface. याद किए थे हमने डायरेक्शन, ये हो गया नॉर्मल या रिएक्शन फोर्स. So this is the complete free body diagram of the object. अगर free body diagram बनाना नहीं आया, then we cannot discuss the numericals that we are going to see in the other class. विवेक, टेंशन कैसे होगा यहाँ पर? स्ट्रिंग कहाँ है? स्ट्रिंग नहीं है ना. देयर विल बी नो टेंशन विदाउट एनी स्ट्रिंग. ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा. हाउ डिड आई नो दैट फ्रिक्शन विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन? बिकॉज द ब्लॉक will move in the downward direction. It will try to move. So friction will be balancing, because मैंने पहले ही बता दिया था that this block is at rest or block is held by the force. Another FBD example. So this is the ball, right? This is the ball here, which is stuck in between these surfaces. तो इसका फ्री बॉडी क्या होगा? देखो, पॉइंट मास यही कंसीडर कर लो. इस सरफेस के वजह से नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा, राइट, वर्टिकली अपवर्ड. इस सरफेस के वजह से नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा. So let us say N1 and N2, and there will be weight. Weight किधर होगा? Vertically downward. Is this understood to all? Whatever we talked about the free body diagrams, you have to tell me whether is it understood. We will see more examples. आज हम सिर्फ basic examples देख रहे हैं. फ्रिक्शन के लिए मैंने कंसीडर नहीं करने का है ना. दिस इज नॉट रफ सरफेस आई हैव मेंशनड. अगर रफनेस मेंशन नहीं रहेगा, फ्रिक्शन मेंशनड ही नहीं रहेगा, तो हम फ्रिक्शन क्यों रिप्रेजेंट करेंगे? इफ इट विल बी मेंशनड इट इज रफ, देन वी हैव टू टेक द फ्रिक्शन फोर्स. इनसाइड थोड़ी ड्रॉ करना है भाई, ये इनसाइड फोर्स थोड़ी ड्रॉ किया. इस ऑब्जेक्ट को मैंने पॉइंट साइज कंसीडर किया, तो उस पॉइंट साइज पे कंसीडर करने पे मुझे फोर्स मिला ये सारे. बिकॉज दिस इज द रूल टू ड्रॉ FBD. I should consider the object as point sized. That's the first rule. If you do not consider point size object, then you have to include the rotation. So now we haven't understood or even read rotation. Okay, another situation. धीरे धीरे प्रैक्टिस से सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे. दिस इज द सरफेस. आई कीप टू ब्लॉक्स. दिस इज वन ब्लॉक, दिस इज अनदर ब्लॉक. नाउ ये भी रफ है, राइट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ सरफेस, दिस इज ऑल्सो अ सरफेस, तो ये भी रफ दे दिया मैंने. So let us say I give you the information कि ये जो surface है, this is providing friction F1 and this surface is providing friction F2. Masses are M1 and M2 and force is applied on this. So now you have to draw all the FBDs. तो ध्यान से इस प्रॉब्लम के देखते हैं. This is the last problem for today. कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? दो ऑब्जेक्ट.
तो दो एफबीडी आएंगे, M1 और M2। मैं देखो ऑब्जेक्ट ब्लॉक बना रहा हूं, बट जस्ट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड, हम प्रॉब्लम में भी ब्लॉक में ही कंसिडर कर लेंगे सारे फोर्सेस, बट एट द बैक ऑफ माइंड वी शुड रिमेंबर दीज आर द पॉइंट मासेस। तो M1 पे क्या है, देखो एक तो वेट है M1 का, और M1 पे इस सरफेस के वजह से एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, राइट। सो लेट अस से N1, एंड M2 पे भी वही होगा, एंड रिएक्शन ऑन M2 बिकॉज ऑफ दिस सरफेस। अब देखो ये भी तो रिएक्शन लगाएगा, राइट। जैसे हम ब्लॉक को यहां कंसिडर कर रहे थे ग्राउंड पे रखे हुए, सो ग्राउंड वाज अप्लाइंग रिएक्शन फोर्स, तो हम ऑब्जेक्ट इसकी एफबीडी बना रहे थे, वी यूज्ड टू कंसिडर दिस, बट this also applies reaction force, right? We didn't consider this because this was applied on earth, और हम अर्थ का फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहे थे। in the same manner M2 will apply reaction to M1 in this direction, and M1 it will apply reaction on M2 in this direction, right? Reaction force is always applied opposite to the mass, तो M2 पे दो रिएक्शन होगा, एक तो N2 और दूसरा N1, right? Observe, remember the direction. On M1, this normal force will be applied. This is the normal due to M2. And on M2, normal will be applied due to M1. So due to M1, what force is applied on M2? We are using that to draw the FBD. ये जो force given है, this is applied on M2. So I should only show it on M2. Right? Point size consider कर रहे हैं ना, तो सबको एक point पे लगाते हुए दिखा देते हैं। नाउ कंसिडरिंग द फ्रिक्शन, फोर्स इधर लगाया, इस सरफेस पे फ्रिक्शन किधर होगा, इधर, राइट। तो ऑन M2 आई ड्रॉ द फ्रिक्शन F1। यहाँ पे सरफेस पे देखो फ्रिक्शन दोनों ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा, तो M1 पे किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जस्ट अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन, दिस सिचुएशन, जस्ट अंडरस्टैंड कि इसको हमने जोर से झटका दिया, तो M1 क्या होगा, पीछे आएगा, राइट। दिस विल कम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और जोर से देंगे तो और पीछे आएगा, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। सो फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन M1 विल बी इन दिस डायरेक्शन, और फ्रिक्शन तो F2 है, दिस इज ऑन एक्टिंग ऑन M1। अगर इस पे फ्रिक्शन इधर है, तो M2 पे फ्रिक्शन किधर होगा, इधर होगा, F2। So from this example it should also be clear कि जो फ्रिक्शन फोर्स है या फिर नॉर्मल फोर्स है या फिर टेंशन फोर्स है, दीज आर ऑल इंटरनली एक्टिंग। इंटरनली एक्टिंग का मतलब हो गया कि जैसे ये ऑब्जेक्ट बनाया M1 और M2, राइट, तो दोनों पे ही नॉर्मल एक्ट कर रहे थे, N1 के वजह से M2 इधर नॉर्मल, N2 के वजह से M1 पे नॉर्मल इधर, तो दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो होगा, और जीरो आना चाहिए बिकॉज टू दिस सिस्टम इफ आई ऑब्जर्व, एक ही तो फोर्स लग रहा है, बाकी सारे फोर्स कैंसिल होके जीरो हो जाना चाहिए, तो ये फ्रिक्शन भी जीरो हो जाना चाहिए, राइट। रेस्ट ऑल सिचुएशंस गाइस वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, एंड वी विल अगेन स्टार्ट विद द एफबीडीज। देखो एफबीडी अभी खत्म नहीं हुआ है, पूरे चैप्टर में एफबीडी ही यूज होना है। ऑल्दो इफ वी टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन या कोई भी मोशन, सब में अब नाउ वी विल डील विथ व्हाट फोर्सेस आर एक्टिंग। सो डू नॉट थिंक कि ये आज ही कंप्लीट हो गया, ये आज बस बेसिक इंट्रोडक्शन था, और जो मेरे माइंड में आ रहा था वो बस नॉर्मली ला रहा था। टुमारो वी विल गो विथ रेस्पेक्ट टू द क्वेश्चंस, है ना। उससे पहले इस थ्योरी को, इस बेसिक एग्जांपल्स को हम फिर से कवर करेंगे, स्पेशली दिस प्रॉब्लम, एंड देखो ये प्रॉब्लम कर लेंगे, ये सब तो ये कर लेंगे, बाकी सब बेसिक है, राइट। सो वी विल सी दीज प्रॉब्लम्स अगेन, एंड ऐसे ऐसे कुछ और सिचुएशंस लाएंगे। All right everyone, then let us meet in the next class, and all of you try to revise this FBD, है ना।
जो भी समझ में आ रहा है, अभी फर्स्ट ही क्लास हमने किया, जो भी है वो रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ऑलराइट, बाय एवरीवन।